in pipes or tube, the vibrating air column जो होता है is a bit longer than actual length of the tube. So we have to apply end correction in the formula. Suppose एक ट्यूब है closed at one end, तो उसमें जब आप वेव सेटअप करेंगे गुरशीष, तो वेव इस तरह से सेट होगा. सपोज मैं कोई भी वेव लेता हूँ रैंडमली ऐड का वेव, तो ये ट्यूब के बाहर थोड़ा सा चला जाता है. हाँ राइट. दिस इज एंड करेक्शन कि इसे आपको लेकिन आप ट्यूब का लेंथ क्या है, L है. एक्सपेरिमेंट में तो व्हाट वी डू, वी टेक L, but actually what we have to take L plus delta x equals to actual length is L plus delta x. This is what we have to take in the formula of nu is equal to tube 2n minus 1 4 times L plus delta x into c. Got it? If I have another tube which is open at both ends, तो जो दोनों तरफ से खुला होगा गुराशी, तो फिर दोनों तरफ से ये डेल्टा एक्स हो जाएगा. इधर से भी बाहर होगा, इधर से भी बाहर होगा. So this is delta x and on this side also this is delta x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू नॉट इज n into c into 2l plus 2 delta x. ठीक है. So this end correction, the value of end correction is constant. Okay. And this value end correction delta x is 0.6 r. Where r is the radius of tube. बस ये एक याद रखना. तो किसी भी क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ ट्यूब दे देता है जिसके अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, तो जस्ट यू हैव टू बी स्मार्ट कि यहाँ पे एंड करेक्शन लगेगा.